Okay, let's see one more question of chord of contact. So the question is, find the coordinates of the point of intersection of tangents. Okay, what you have to do, you have to find the coordinates of point of intersection of tangents at the points where the line, this particular line meets the circle, दिस पर्टिकुलर सर्कल. ओके, इक्वेशन इज गिवन. तो अब देखो, सबसे पहले गाइस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा यहाँ पे. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सो इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम, लेट्स सपोज दिस इज योर सर्कल बेटा. ऑलराइट, ये हमारा गिवन सर्कल है जिसका सेंटर आपको दिख रहा है. इट्स 2, -3/2. ओके, दिस इज द सर्कल. Now what I have to do, I have to find the coordinates of point of intersection of the tangents. Tangents के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने. कौन सी टेंजेंट्स? टेंजेंट्स एट द पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स द सर्कल. इसका मतलब क्या होगा कि लेट्स सपोज दिस इज योर लाइन 2x + y + 12 = 0. कैन यू क्लियरली सी बेटा, इट इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स A and B, राइट? तो अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूं, देन कैन यू सी दे आर इंटरसेक्टिंग, लेट्स सपोज एट अ पॉइंट T. So we need to find coordinates of this point T. ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं. पहले बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता है, दिस लाइन, सो वी कैन सॉल्व देम एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी, A and B, राइट. यस, यू कैन डू वेरी इजीली. A और B आ भी जाएंगे आपके पास. फिर आप क्या कर सकते हो, A और B पे T = 0 यूज करके, क्योंकि A और B सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट फॉर्म यूज करके हम टैंजेंट्स, दोनों टैंजेंट्स T और TB की इक्वेशन लिखेंगे और फिर उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे. इस मेथड में कुछ भी गलत नहीं है, बट it's little bit lengthy. All right, it's not wrong, but it's lengthy. And guys, in competitive examination you have to approach the method जिसमें थोड़ा टाइम हमें कम लग रहा हो, right? It's all about time, speed, right? So we have to always look out for methods where we can save our time. Alright, तो अब दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड है गाइस, इफ यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंड. अनदर एंड मतलब अभी हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ की, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ की, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है. अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा समझू कि एक पॉइंट T था, T से मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ की, TA और TB, और A और B को मैंने ज्वाइन किया, तो क्या मैं इस AB को कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ T बोलूंगा, राइट, जिसकी इक्वेशन मुझे ऑलरेडी गिवन है. सो गाइस, हियर व्हाट आई कैन डू, इफ आई वांट टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ T, let's suppose these are x1 and y1, can I say the equation of AB, all right, equation of AB, if I want to write down, all right, it will be simply T = 0 with respect to the point x1 y1, yes or no? Because it's a chord of contact यार. तो T = 0 x1 y1 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे आप? It will be x(x1) + y(y1) minus 4 times x will become x + x1/2, y will become y + y1/2 minus 1 = 0. Okay, so guys, here this will get cancelled 2 times. So if you simplify, na beta, if you simplify it, it will become what? X, if you see the coefficient of x, it will be x1 - 2. Right? If you see the coefficient of y, it will be y1 and +3/2. Right? And this -2x1 + 3y1 - 1, these are all constant because x1 and y1 are coordinates of a point ना, तो ये सब क्या होंगे? Constant होंगे. तो ये आपकी क्या हो गई? Equation of chord of contact है guys. ax + by + c = 0, right? Equation of a straight line. Now this is equation of AB with respect to t = 0. Equation of AB, we already know it is 2x + y + 12 = 0. All right. So guys, if these two are the equations, 2x + y, sorry, if these two are equations of the same lines, अगर ये दोनों सेम ही लाइन की इक्वेशन है यार, तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि we can just compare their coefficients, yes or no? Because these two are equations of the same line. और अगर same line की equation है तो guys, you can just compare the coefficient. So here if you compare the coefficient, it will be x1 - 2/2. I am going on the next page.
x1 minus 2 by 2, right? Coefficient of x will be equal to coefficient of y. वो क्या था बेटा? Coefficient of y was y1 plus 3 by 2 upon oh sorry, again I have written 3. It will be 1 only ना, 3 का है यहाँ पे, y है, right? So it will be y1 plus 3 by 2 upon 1. All right, so I will write it as y1 plus 3 by 2 upon 1 equal to the ratio of constant terms, and the ratio of constant terms is this thing, minus 2x1 plus 3y1 minus 1. All right, that is minus 2x1 plus 3y1 minus 1 divided by 12. ठीक है, सिंपली क्या किया, कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो हमने माइनस 2x1 प्लस 3y1 माइनस 1 अपॉन 12 कर दिया. तो बस अब ये दोनों सेम लाइन की इक्वेशन थे, तो कोफिशिएंट कंपेयर किया. नाउ यू कैन जस्ट सॉल्व देम. ऑलराइट, सो इफ यू सॉल्व दीज टू गाइस, यू विल गेट x1 minus 2 is equal to 2y1 plus 2 into 3 by 2, that will be 3. So x1 is coming 2y1 plus 5. Okay, this is one relation between x1 and y1. And if you solve any of these two, let's suppose we are solving these two, so it will become 12y1 plus 12 into 3 by 2, so 6 3s are 18 is equal to 1 into this thing, that is minus 2x1 plus 3y1 minus 1. So here if you see, you are getting 12 minus 3, that will be 9. Okay, so 9y1 plus 2x1 is equal to minus 19. Okay, so x1 I can put this value, so it will become 9y1 as it is, plus 2 times x1 is 2y1 plus 5 equal to minus 19. So 2 2s are 4 plus 9, that will be 13, right? Yeah, 13y1 and 5 2s are is 10 equal to minus 29. Okay, so y1 is coming minus 29 upon 13. Okay, this is coming minus 29 upon 13. And if you put this y1 over here, x1 will come 2 into minus 29, that will be what? Minus 58 beta. तो minus 58 upon 13 plus 5 करोगे आप, तो x1 का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 13 5 65 minus 58, that is 7 upon 13. So x1 is coming 7 upon 13, y1 is coming minus 29 upon 13. Okay, so what I can say? I can say the coordinates of point of intersection will be 7 upon 13 comma minus 29 upon 13. Okay, so this is how you can solve question very easily. ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा if you take a different approach, right? Reverse approach. हमने क्या कर लिया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान के AB की इक्वेशन लिख ली यूजिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, और फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, राइट? बिकॉज द इक्वेशन ऑफ AB वाज ऑलरेडी गिवन टू अस. ओके, सो दिस अप्रोच कैन बी आल्सो यूज्ड समटाइम्स. ऑलराइट, सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा. ओके, ऑलराइट, वेरी गुड. Let's see our next concept, that is chord. Okay, chord with given midpoint. ठीक है, basically here what we are trying to do, we are trying to find out equation of a chord whose midpoint is given. ठीक है, तो क्या बोला गया आपसे बेटा कि एक let's suppose सर्कल है आपके पास. ओके, एंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c equals 0. All right, we have this circle and the center of this circle is minus g comma minus f. All right, center of this particular circle is minus g comma minus f, and we need to find equation of a chord. Let us again call it as AB. Okay, हमें AB chord की equation निकालनी है whose midpoint, that is M, is given as x1 comma y1. ठीक है, गिवन मिड पॉइंट. ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 आपको गिवन है, सेंटर आपको पता है बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो नाउ वी हैव टू फाइंड equation of AB. Again guys, a standard result. Chord whose midpoint is given. Again this is a standard result. Let's see what is the standard result first. So here guys, we already know if I drop a perpendicular, all right, if I join basically the center and the midpoint of any chord, basically we can say this line will be perpendicular to the chord, right? It is reverse of if you drop a perpendicular from the center, it bisects the chord. ठीक है, तो हमें already पता है M is the midpoint, तो अगर हम center को let's call it as O, if you join O and M, obviously you can say
that OM will be perpendicular to AB. Okay, now if OM is perpendicular to OB, guys, what I can do, I can write down that you can clearly see what is slope of OM. It will be y1 minus of minus f, that is y1 plus f, similarly upon x1 plus g. This is the slope of OM line, right? So if slope of OM is this, can you tell me what will be slope of AB, beta? Huh? तो perpendicular lines है, so m1 into m2 should be -1. That means slope of AB, if I write slope of AB, it should be reciprocal and with a minus sign, right? Reciprocal with a minus sign, so it will come minus times x1 plus g upon, sorry, y1 plus f. So this is the slope. It is passing through x1, y1. So how you will write down the equation of the line? It will be y minus y1 is equal to m into x minus x1. So guys, if you multiply it, you will get, see, y into y1, that will be y1 minus y1 square, then f into y1 minus y1 into f is equal to x into x1 plus, sorry, this is minus sign, so it will be minus x into x1 minus g into x minus x1 minus minus will become plus x1 square, and minus minus again will become plus gx1. So this is the equation, guys. It's a little bit complicated expression, but if you rearrange the terms, taking this xx1 over here, taking y1 square over here, so see, this will become xx1 plus yy1. All right, xx1 plus yy1. All right, and if you take this y1 square over here, it will become x1 square plus y1 square. Okay, remaining terms jo hai, guys, if you see the remaining terms, these are minus gx plus g into x1. All right, so if you take the minus gx over here, it will become gx. All right, and this will be what? Sorry, this will be gx, and here it should be fy. Sorry, it will be not y1, it will be fy only, plus fy. Okay, and here it will become gx1 plus fy1. Okay, so now guys, if you closely look at this relation now, if you closely look at this relation, this expression is nothing but it will get simplified to t equal to s1 kind of thing. क्या बन जाएगा ये? T equals to S1, basically because S1 is what? It will be x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c, और T जब आप लिखोगे so it will be what? xx1 yy1 g into x plus x1, राइट? सो दैट्स व्हाई गाइस gx1 gx का टर्म रहेगा और एक gx1 को अगर आप इधर ले लेंगे, सो ओरिजिनली इट वाज 2gx1 बट सब्ट्रैक्टिंग वन टाइम इट इज रिमेनिंग ओनली gx1, और ऐसे 2fy1 माइनस fy1 फ्रॉम हियर इट विल बी fy1, और प्लस c दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. सो बेसिकली इफ यू सी दिस थिंग इज नथिंग बट इट इज रिटन एज T equal to S1. इसका मतलब क्या हुआ? If you want to write down equation of a chord whose midpoint is M, alright, or you can say whose midpoint is given, the equation of chord can be simply written as T is equals to S1. So again a standard result, alright, and this result again it follows all your conic section, parabola, ellipse, hyperbola. सभी में guys हमको अगर equation of chord whose midpoint is given लिखना है तो हम वो इतना बड़ा expression याद नहीं रखेंगे, हम कहेंगे it is T equal to S1. Right? So what is chord of contact? T equal to 0. What is pair of tangent? SS1 equal to T square. What is chord whose midpoint is given? It is T equal to S1. T आपको लिखना आता ही है, S1 भी आपको लिखना आता है, तो बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, you will get the equation of a chord whose midpoint is given. I have shown you the proof, but that is just for your understanding. ठीक है, लेकिन इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे. Alright, let's see a question then.
find the equation of that chord of the circle which is bisected at 3,2. So very simple, you have a circle and you need to find equation of that chord which is bisected at this point. Bisected means, can we say it will be the midpoint, and if it is the midpoint for this circle. Now see, circle equation of circle is what? It is x square plus y square minus 15 equals 0, right? So you will write t equal to s1 will be the equation of chord whose midpoint is given, right beta? So t will be x1, that will be 3, plus y1, that is 2, c will be as it is, equal to s1, that simply put the point in your equation. So 3 square plus 2 square minus 15. So minus 15 gone, we are getting 3x plus 2y equal to 9 plus 4, that is 13. Your question is solved, guys. That's it. This is your equation of chord whose midpoint is given. Directly ये हम क्या बोल देंगे कि उसका equation होगा. All right? Okay. Very simple formula based question. Let's see the next question. So in the next question it is given, find the coordinates of the middle point of the chord which the circle cut off on the line y equal to x plus 2. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को गाइज अगर आप समझे तो क्या बोला है, यू नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड विच दिस सर्कल, लेट्स सपोज दिस इज योर सर्कल, ओके, विच दिस सर्कल कट ऑफ ऑन द लाइन y इक्वल टू x प्लस 2. तो ये मान लिया कि आपके पास एक लाइन है बेटा y इक्वल टू x प्लस 2. ऑलराइट, तो हमें क्या करना है, हमें इस कॉर्ड के, बेसिकली यू कैन सी इट्स अ कॉर्ड, वी नीड टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉर्ड, राइट? मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड which this circle cut off on this line. Cut off means this will be your AB will be your chord and you need to find its mid. अब अगेन इस क्वेश्चन को भी कैसे कर सकते हैं, यू हैव द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यू हैव द इक्वेशन ऑफ लाइन, यू कैन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट. ठीक है, y इक्वल टू x प्लस 2 पुट करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो, a और b, उसका मिड पॉइंट m आ जाएगा. ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, the same thing which we have done in the previous question of chord of contact, we can do one thing, we can write down, basically this is what, this is if we assume coordinates of your m as x1 y1, okay, so we can write down equation of chord whose midpoint is given. We have the equation as y equal to x plus 2, we can compare them. All right, so that can be also done, but here if you see, if you directly solve this question then also it will be very easy. Let me use that method. So if you write y equal to x plus 2 and find the point of intersection, so that will be something like this, right? Putting y equal to x plus 2 in the equation, so you'll find the point, intersection point. So it is coming x square plus 4x plus 4, 4x minus 2x is 2x, minus 4 minus 3 equals 0. So if you simplify, we are getting 2x square plus 6x minus 3 equals 0. Okay, so this is your quadratic equation which we are getting, right? This is our quadratic equation, 2x square plus 6x minus 2x square plus 6x minus 3 equal to 0. अब आपको क्या करना है गाइस, अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं. तो इसके रूट्स देखेंगे अगर आप तो क्या आ जाएंगे बेटा, यू कैन यूज द फॉर्मूला दैट इज माइनस 6 प्लस माइनस 36, b square is 36, minus of 4ac, so that will be minus 4ac, okay, divided by 2a which is 4. So if you see, the roots are coming minus 6 plus, this will become 4 2s are 8, 8 3s are 24 and minus minus will become plus. So 24 plus 30, that is root 60, है ना? और रूट 60 को बेटा आप क्या लिख सकते हो, रूट 60 यू कैन एक्चुअली राइट इट एज 2 रूट 15, है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 15 अपॉन 4. All right, so this is the x coordinate. All right, and similarly if you see, the y coordinate will be what, y coordinate will be just x plus 2 and x plus 2 over here. Okay, so basically one point will be x1 and the other point will be x2 if you see. ओके, तो सम ऑफ आपको क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट. बेसिकली इफ आई से, लेट्स सपोज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आई एम कॉलिंग इट एज व्हाट, x1 and y1 we have seen, so let me call it as what I can take, alpha 1 beta 1, okay, alpha 1 beta 1 and alpha 2 beta 2. So that means
if you see beta, the x coordinates are what? Alpha 1 and alpha 2 you can say are the roots of this equation. तो अगर आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है तो उसके कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 कॉमा बीटा 1 प्लस बीटा 2 बाई 2. अब alpha 1 plus alpha 2, can I say it is the sum of roots of this equation? That will be minus b upon a, so minus 6 upon 2, that will be minus 3. So the x coordinate of midpoint is simply coming minus 3 by 2. What will be the y coordinate? तो देखो बेटा बीटा 1 that is the y coordinate, उसे आप लिख सकते हो अल्फा 1 प्लस 2. तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस 2 और बीटा 2 हो जाएगा अल्फा 2 प्लस 2. तो ये आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय plus 4 by 2, which you can actually write it as alpha 1 plus alpha 2 by 2 like this plus 2. So this thing is coming minus 3 by 2 plus 2, that is 4 minus 3 1 by 2. So you can say the coordinates of m are coming minus 3 by 2 and 1 by 2. ओके, सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं बेटा? m के कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं minus 3 by 2 कॉमा 1 by 2. ओके